next topic is responses to abiotic factors. In previous class we have learned the different types of abiotic factors and their effect on the organism and environment. So, response to the abiotic factor. Organisms have different responses towards different abiotic factors. Organisms have different responses to the abiotic factors. Every organism can survive in the different type of the abiotic factor because the capacity of the tolerance power of every organism is different. The different responses of the abiotic factor can be followed. Depends on the responses of the abiotic factor. Organisms have the regulator, conforms, migration as suspend. Suspend regulators. Every organism have a tolerance power to the regulation power. Conformers, some are very limited capacity to the regulation. Migrate, move from one place to the another, different of the environmental condition. Suspend, come into the summer or a winter into the rest period. Every organism have these four types of responses, which these is the graph. Graph is the external level and the internal level. Conformers and regulators. Conformers is denoted by the straight line because conformer capacity on the single type of temperature, but in the regulator, these are also the regulators. They have also the body, their body converts the condition of the regulates in the different type of the environmental condition they can regulate. Partial have the state and because they have a limited capacity for the regulation. So we will learn in this regulators. Organism with the ability to maintain the homeostasis. Homeostasis, what is the homeostasis? The natural capacity, tolerance, or to have the tolerance power of the without the external devices. होम्योस्टेसिस का मतलब है कि जैसा नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमारी बॉडी उस नेचुरल एनवायरनमेंट को हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, मतलब समर्स हो या विंटर्स हो, उसमें हमारी बॉडी अपने आप को खुद रेगुलेट कर सके विदाउट एक्सटर्नल डिवाइसेस के. कौन से एक्सटर्नल डिवाइसेस है कि गर्मियों में हम इन समर में वी कैन यूज द एसी, एयर कंडीशनर टू कीप द टेम्परेचर low. So this is not a homeostasis. The homeostasis is the process by which our body itself have the capacity to tolerate or the regulate the body temperature. For example, in summer when the temperature is high outside, the body sweat. So the body cools inside. So the body regulates itself in the summer without any device, AC or a cooler. So same as in the winter. When we winter, the very low temperature outside the body, the body shivering. When shivering जब हम कांपते हैं तो this is तो हमारी बॉडी एनर्जी हीट गेन करती है. So the body naturally heated. So it regulate the temperature and maintain the body temperature according to the
summer and winter. In some winter we can use the external device, the heater, but this is not the homeostatic. Without heater हमारी बॉडी का टेम्परेचर अपने आप ही यूज़ होना चाहिए. We can use the woolens or a sweater. So our body temperature is 37 डिग्री सेल्सियस. बाहर चाहे 50 डिग्री सेल्सियस हो या उससे वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन रहता है, क्योंकि गर्मियों में हम स्वेट करते हैं, हमारे पसीना निकलता है, उससे हमारी बॉडी ठीक होती है. तो हमें कूलर और एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. इसी तरीके से जो जब बाहर टेम्परेचर लेस देन 37 होता है, हमारी बॉडी शिवरिंग करती है, या जब हम अपने हाथ को रब करते हैं तो उससे हमारी एनर्जी गेन होती है बॉडी में, और हमारी बॉडी हीट गेन करती है. तो द हीट एंड लॉस एंड गेन depend on the homeostasis. The 37 degree, some mammals and few lower vertebrates and invertebrates. Some mammals में, lower vertebrates में और invertebrate species capable the homeostasis. ये इनकी बॉडी टेम्परेचर नेचर ने ही ऐसी कैपेबिलिटी दी है बॉडी में कि वो अपनी बॉडी को आउटसाइड लेस है या देन है, वो उसको लेस है और मोर है, उसमें वो अपने आप को होम्योस्टेटाइज कर सकते हैं. बिकॉज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन इन अ ह्यूमन मेंटेन्स द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इट 37 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमन की बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. इन समर में जब हमारा मोर देन टेम्परेचर होता है, मोर देन द बॉडी टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर? आउटसाइड. तो व्हेन वी स्वेट, हमारे पास स्वेट होता है. And in the desert cooler, what happen in the desert cooler in operation? desert cooler में भी होता है कि वो गर्म हवा को क्या करती है? ठंडा करती है, जिसमें हम वाटर भर के रखते हैं कूलर में. तो वो वैसा हमारी बॉडी की जो कूलर का सिस्टम है वही हमारी बॉडी का सिस्टम है. बट इन द विंटर व्हेन द लेस लोअर देन द 37 डिग्री आवर बॉडी इज शिवरिंग और द मसल्स एंड प्लांट डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर, बट प्लांट डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ रेगुलेटर्स to maintain the body temperature. Here you can see homeostasis, the shivering in the shivering warm up body in the cold environment. When the cold environment we can use the woolens. Here you can see the gloves and the woolens, and the temperature maintain our temperature by the shivering. The body self regulate internal environment to maintain stability. It is called the homeostasis. Homeostasis is the capability of the body self regulates temperature internal environment maintain to the stability according to the outer environment. Sweating cools down in a body warm into the warm environment. In the summer we can sweat and the body cools down. So here the temperature is 37 degrees Celsius maintained and by the shivering, and here in summer the 37 degree also maintained by the sweating. Temperature control, we can this is a home and heater or fan. हम home और temperature control heater या fan से कर रहे हैं. This is not the homeostasis because we depend on the external devices, but the body sweat without the fan we sweat and cools down and shivering in the winter and heat gain heat. So this is a homeostasis, it is not a homeostasis. So homeostasis does not divided or depend on the external devices. The body maintain temperature itself.